Hello, I'm Elizabeth McAnally, and I'm sitting here with Bimaji Bahuguna and Sunderlalji Bahuguna. We're in Dehradun at HESCO Center for Rural Development, where they're working with local resources, local wisdom, and local markets. So I have some questions that I'd like to ask you, Bimaji. How did you get involved with environmental work? हाँ मैं समझी क्योंकि हम वनाधिकारी के बेटी रही और वनों से प्रेम रहा और हमारा कार्य क्षेत्र गांव में रहा, तो हमने देखा कि गांव में पहाड़ का जीवन, स्त्रियों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ है और व्यापारिक नीति से उनके जीवन में समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसलिए हमने अपना कार्य क्षेत्र उनके बीच में रखा, दूर दराज के गांव में। तो हमको जब ये पता चला कि उनको ये जंगलों के और इस व्यापारिक वन की दृष्टि से कैसे उनका जीवन कष्टमय हो रहा है, तो हम उससे जुड़े। Daughter of a forest officer, and I lived with my father during my childhood in the forest. When after my marriage, when we settled down in a village in Silera, in the interior village, then we realized that their life depends wholly on the forest, and protection of forest is necessary for their survival. In this way, I became involved in environment. Yes. How did you meet your husband, Sunderlalji? क्योंकि हम रियासती उसमें पले थे, हमारे यहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी और हम राजा के गुलाम थे, अंग्रेज सरकार को। तो राजशाही में स्कूल नहीं थे, तो मुझे मेरे दोनों भाई बगावत बहुना जी और मेरे दोनों भाई राजशाही के खिलाफ जेलों में चले गए थे अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों के लिए। और मुझे तो जाने का मौका नहीं मिला जेल में, क्योंकि उस समय महिलाओं की कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं थी। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो फिर ये मेरी शिक्षा के बारे में, आगे शिक्षा के बारे में हुआ कि कहाँ पढ़ाया जाए, क्योंकि वहाँ पर आठवीं के अलावा कोई शिक्षा नहीं थी। तो मुझे सरलाबेन के पास, जो गांधी जी की अंग्रेज शिष्या थी, इंग्लैंड की रहने वाली थी और उनके विचारों से प्रभावित होकर के भारत आई थी। तो इतना पैर कर। You know, I was living in a village, but there was no arrangements for the education of the girls. And my both brothers had gone to jail in freedom movement, so I thought, how can I take part in the freedom movement? There were no schools for the girls in that area, in the princely estate. But Sarlaben, an English disciple of Gandhiji, she had opened an ashram in Kausani, and so I went to there for education and worked with her. उसके बाद जब शिक्षा के लिए वहाँ गए तो मैंने गांधी को नहीं देखा, लेकिन मुझे लगा कि गांधी के जो कहता है कि मेरा जीवन मेरा संदेश है, जो मैं समाज में जिन मूल्यों को कायम करना चाहते हैं, पहले अपने जीवन में उनको जी करके दिखाओ। तो सादगी, सदाचार, संयम, श्रम, ये चीज़ें, तो ये हमने सरलाबेन के जीवन में देखा। और आम आदमी के प्रति कैसे आत्मविश्वास पैदा किया जाए, तो उसको लेकर के हमें लगा कि एक विचार है जिसके लिए हमें समर्पित होना है। और एक बहन जो विलायत से आकर के हमारे पहाड़ों के लिए इतना अपने जीवन समर्पित कर चुके हैं, तो हमें समाज के लिए और गांधी के जो रास्ता है उसके लिए ही अपने को समर्पित करना है। I had not seen Gandhi, but I had gone for education in Sarlaben ashram. She was an English lady, and I had seen her life and found the image of Gandhi in her work and in her life. And so I lived with her, studied there and worked with her, and from her I got this inspiration and felt that we should work for the protection of environment. या फिर हमारे घर वालों ने शादी तय की
तो मैंने भगवान जी से शर्त रखी, वो जेल में जब स्वतंत्रता हो गई तो राजनीति के अच्छे लीडर थे और अपने उसमें हरिजन उत्थान को लेकर के, समस्याओं को लेकर के राजनीति के माध्यम से काम कर रहे थे। और मैं चाहती थी कि जैसे गांधी ने कहा है कि मैं स्वतंत्रता के बाद दूर दराज के क्षेत्रों में बैठ करके लोगों में आत्मविश्वास पैदा करना है, तो उसके लिए तो फिर मैंने शर्त रखी कि ये राजनीति छोड़ेंगे और हम मिल करके कहीं दूर पिछड़े क्षेत्र में काम करेंगे, इसके लिए तैयार हूँ। तो फिर शादी होगी। उन्होंने वो उससे इस्तीफा दे दिया और हम लोगों ने अपना एक बहुत पिछड़े क्षेत्र में अपना स्वतंत्र रूप से कार्य शुरू किया। See, he was a political leader, but when my parents fixed our marriage, then I put a condition that he should leave the politics and settle down in a far off village, remote village, to serve the people. And he did, he resigned, and then we opened our ashram in a remote village. Yes, so this is the Siliyara ashram? Yeah, Siliyara. Tell me about this ashram. What was the purpose for creating the ashram? What was the purpose or the inspiration maybe for founding the ashram? Yes, you know, we had seen Sarlaban's ashram, so we wanted to establish one such institution in the interior of our area and do Gandhi's work in the villages, because Gandhi had called the freedom fighters to work in the villages. Very good. I am very interested to know about the role of art in environmental movements. So in the Chipko movement, how have songs inspired and motivated people to help save the forest of the Himalayas? Songs and poems. Yes. We young लोग जो है ना वो बल कने वे मजी जंगल को बारह मजी दिलचस्पी दिखाया और उनके जंगल में जंगल बचाया जाना। हाँ, तो ये बोला कि उनका जीवन जंगलों पर निर्भर था, उनका सुबह चले जाते हैं। Their life depended, the life of the people depended on the forest. Yes. And from early in the morning till late at night, they were working in the forest, collecting fodder for their cattle and the firewood and all these things. So their life was dependent on the forest solely. And yes, we had a friend, Ghanshyam Sailani. He was a folk singer. Yes. And he composed songs on the forest and other problems of the area. He was our main worker, and so he composed a song about the forest, that the forests have been damaged and there are floods on account of this. So brothers and sisters come together and hug the trees. Yes. So this word Chipko came from his mouth in one of his poems. He said, now hug the trees and don't allow the property of the forest to be destroyed. Brothers and sisters, come up, rise up, and we have to save the forest from the government forest. Yes, wonderful. I was wondering if you might be able to remember the song, the folk song about Chipko, and sing it for us. Ibaja burasa sikulai kidali, nakata yu rakha jagwali, patyau macha dudha jadu macha pani, surya batho cha barkha batwani, ya dharti sajai upkar wali, yo pala parosa yu rakha jagwali. Ganga Jamuna Kai Chana Sirana Pasu Mana Kyon Ka Mana Parana Ya Dharti Sajai Upkar Wali Ya Pala Parosa Yu Rakha Jawali Ya
बांजा बुरा सासी बोलाए की डाली न काटा यूं रखा जवाली। ये को मतलब बता। These oaks and rhododendrons and these pine trees don't cut, protect these trees. These trees have decorated this earth, and you just look after these trees. और ये इनकी the leaves of these trees contain milk, and the roots contain water, conserve water. Or these are the life and soul of human beings and the animals. These are the pillows of Ganges and Yamuna. Our rivers emerge from these. So, and these are the life and soul of man and the animal. So protect these, protect these. So wonderful. Thank you so much for sharing that. Along with songs, I'm wondering about sacred scriptures, like the Bhagavad Gita. Can you explain how the Bhagavad Gita has influenced your life and work? हाँ, उन्होंने कहा ना कि मैं वृक्षों में मैं छूँ और पर्वतों में मैं छूँ, नदियों में मैं छूँ। You know, Bhagavad Gita में बोली है। हाँ, नहीं यूँ बता ना तुम मुझे। हाँ, you know, it was the forest, the rivers, which inspired us. And वृक्षों। Bhagavad Gita is not an abstract thing. It gives a message for a good life. And Gandhi himself has translated it into as Anasakti Yoga. Vinoba Bhave, his disciple, has made a big commentary on this Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita is not simply a religious book, but it gives a message for life and creates relationship between human beings and the nature. भारतीय संस्कृति It has the message of the Indian culture. Right. So what message does the Gita have for us whenever the work that we do isn't as successful as we might want it to be? Like if we have failures, say with the Terry Dam, it was a very successful movement, the Anti-Terry Dam Association, but at the same time the dam is now built. And so what can we learn from the Gita? What kinds of inspirations for those? Gita शिक्षण में क्या मिली, क्या प्रेरणा मिली? कर्म जंगल हुआ और इस डैम के खिलाफ हम सही अपने कर्तव्य जो कर्तव्य कृष्ण ने ये बदल कि हम सही निस्वार्थ भाव से और सत्य पर अटल रहना चाहिए. The message of Gita is that we should do selfless service and we should stand by truth. Very good. तो आज को विकास की खातर जो हम मानना कि गलत है, उसके खिलाफ हम अपना सिद्धांत मजबूती से आधार मिले पर दृढ़ बनो. And it is how whatever we think that this development is wrong, it is destroying the nature, so we stick to our principles and Gita gives us strength to sustain. Yes, yes. I have one last question, and that is, do you have any words of advice for future generations? Yes. Yes, we have this message for the coming generations that nature is our mother and nature should be protected and made more prosperous than we are living. विकास जो हम सन में हुए से ज़्यादा अगली पीढ़ी से मिली. And the next generation should get more benefits of development than we are getting today. लेकिन हम खत्म करें प्रजातियां खत्म करें वृक्षों की पशुओं की और प्रकृति में एक प्रकार से असंतुलन पैदा करें जहाँ से कि आज एक विनाश हो. We have eliminated many species of trees and animals, and there has been imbalance in the nature, and the life of the coming generations is becoming more difficult. More and more critical. Right.
Yes. Thank you so much for taking time to talk with me and with all of us today. I really appreciate this. Thank you. Thank you. Thank you.